are reliable. 90% of SMEs are proprietorship kind of concern in India, which means it's a one-man show. So, and each of these entrepreneurs and proprietors have this aspiration to grow, to scale their business up. So from one factory you want to have the second factory and the third factory and so on and so forth, depending on your business and industry. They are averse to hiring good managerial talent. Okay, so there is a trust problem in terms of your team, your people, which hinders the scalability of growth aspirations. Right. I think people should now rebuild the culture of the organizations to build that trust and to get that kind of people who can really take your business to the next level. Okay. As initially we had said, we'll be actually welcoming queries and suggestions via Twitter as well. So we are getting them. Let's take the first one. This first query we are getting is from Mysore. It's from Mr. Satish Babu. The query is, are there any prepayment charges as far as SME loans are concerned if we actually plan to repay the loan earlier? The SME also, I think, up to 25 lakhs, I think we have made it very clear that there is no repayment charges. And in all other cases also, if the borrower has got his own funds and if he is not borrowing from elsewhere, definitely there are no charges. If at all he is borrowing and another bank pays the money to the bank directly from that bank, then there are charges. And again there also I think, if he proves that the rate of interest or any benefit what he is getting from other bank is much better than what we are offering, there also we will extend concession. Next is Anupriya. She's a young entrepreneur from Bangalore and she's talking about that, that has two parts of this question. Number one, that should she visit bank branches or should she visit SME specialized branches to avail SME loan? There are two issues. If she is aware of, if she is known to a branches, it's always better to go to a SME branch through the branches where she is known. If she is not introduced as she is a new customer, it is always better to go to the SME center. Okay. The second part is for you, Mr. Ashwin. She's representing the technology space and she's saying how to approach you. We are all available. We have websites. We have our email IDs out there. It's not difficult to find us. We are looking for the entrepreneurs. We exist because of the entrepreneurs, not the other way around. Time for us to take another break. After the break is the Q&A session with delegates. So stay tuned. The problem with education, our space, which we understand is quality, we cannot reach a situation or a stage where I can confidently say I'll have 1,000 high quality teachers and trainers available across the country. He is keeping the promoter and company two separate entities. Yeah. That is very much important. Okay, we should not think that the company is doing good, so take out the funds from there and buy 2 Mercedes cars. ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। सुबह की चाय के साथ दीजिए अपने इंटरनेट ट्रेडिंग को नई फ्रेशनेस। नेशनल और इंटरनेशनल संकेतों से बनाएं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। FIs की रणनीति जानकर बढ़ाएं अपने कारोबार की मिठास और साथ में जानिए वो स्टॉक्स जो देगी आपको मोटा मुनाफा। तो कीजिए ट्रेडिंग की शुरुआत जी बिजनेस के साथ। देखिए पावर ब्रेकफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। प्रायोजक है लक्स कोजी इनरवेयर। अपना लक पहन के चलो और भविष्य का निर्माण आपके लिए। हम अंतरिक्ष में शटल भेज सकते हैं, हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, हम बड़े बड़े ब्रिजेस एंड मेट्रो बना सकते हैं। तो क्या हम गंगा को साफ नहीं कर सकते? जी मीडिया की गंगा को बचाने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम गंगा जल माई प्राइड। इस मुहिम से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें 0954 028 5000 पर।
हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हर साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी ना। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 उनकी वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम। चंद लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी स्पेस और अपना सवाल लिखकर 57575 पर SMS करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ट्रायोजर लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। ओपनिंग बेल के बाद 30 मिनट एक्शन। क्या है शेयर बाजार का हाल, कैसी है कमोडिटी मार्केट की चाल, देश दुनिया की खबरों का असर और उनसे बनते बिगड़ते संकेतों पर नजर। मार्केट्स एट 10 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे। प्रायोजक हैं लिव इन ब्लाइंड्स, आपके दिल की ख्वाहिश, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च, लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो और BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। प्रॉपर्टी, सोना या म्यूचुअल फंड, कहाँ मिलेगा बेहतर रिटर्न? टैक्सेशन से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के हर कंफ्यूजन का सलूशन। मनी गुरु सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे। Welcome back. You're watching Emerging Business Forum Season 4. Let's move ahead, and now we are going to be playing up the next success story for Bangalore. He's in fact the founder of Think and Learn, Baiju Classes as he's most popularly known. It's a very inspiring story in this education space. So let's take a look at this story now. कहते हैं अगर सोच और जज्बा है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये बात बीजू रविंद्रन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियर की, लेकिन पेशे से थिंक एंड लर्न नाम की सफल एजुकेटिव सर्विसेज के मालिक, और इसे चलाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। 26 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस IIM की सीट को छोड़ना और कॉर्पोरेट करियर को गुड बाय करते हुए बीजू रविंद्रन ने ओवरसीज और डोमेस्टिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के तरीकों को ही काफी हद तक बदल दिया। कैट, UPSC, GMAT, AIEEE, IITG या फिर CA की प्रिपरेशन, ये सभी प्रिपरेशंस बीजू बखूबी करवा रहे हैं। The whole education venture that we started off was conceptualized by my teacher, the founder of Think and Learn and Baiju's classes, that you would call it, Mr. Baiju Ravindran. He was a CAT 100 percentiler, and some of us being interested to get into management and MBA had attended his sessions and his way of thinking in preparation classes for CAT and other exams. And today, the core group of us, the few of us who had actually come in, were in many ways just as students, and that's how we started off. 2008 में जहां 200 स्टूडेंट्स के साथ सफर शुरू हुआ था, अब यह आंकड़ा बढ़कर 20,000 के भी पार हो गया है। लेकिन ये सफर कई चुनौतियों से भरा था। So I had initially proclaimed that Think and Learn is an education services company, and we use technology. But typically what happens is when you start using technology, we are kind of called a technology company, and what technology companies in education have always been doing, unlike us, is just aggregating content, bringing it forward and just presenting it. That one single crucial ingredient of quality was never there. And the idea here was, how do these students who have not actually accepted technology or used it completely utilize it, or how do they accept it to begin with? Think and Learn की कामयाबी का राज बीजू और उनकी टीम की कड़ी मेहनत और लगन है। बीजू मानते हैं कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए सपने बड़े देखना बेहद जरूरी है। सोच बड़ी होगी तभी कामयाबी मिलेगी।
For a young entrepreneur, two things are crucial. The two most important things are thinking big. Now, thinking big is half the job is done. And second part is staying extremely positive. As such, options are unlimited. And if you have genuine interest and if you can give your best, I'm sure it's very easy to become successful. बीजू मानते हैं कि देश में एजुकेशन सेक्टर में बदलाव की जरूरत है और उसी जरूरत और सोच को पूरा करने के लिए थिंक एंड लर्न की टीम प्रतिबद्ध है। बीजू और उनकी टीम को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से शुभकामनाएं। And joining us is Mr. Praveen Prakash. A big round of applause for him. Mr. Praveen, we have seen that SMEs, studies have shown that technology could be a big driver for the SME space. But there are a lot of hesitations as far as technology is concerned. But in your specific case, we have seen that technology has been a major driver and in fact a game changer. The problem with education, our space, which we understand is quality, we cannot reach a situation or a stage where I can confidently say I'll have 1,000 high quality teachers and trainers available across the country. So the only quick fix to ensure that this problem is taken care of, the number one problem called quality, has to be by imbibing technology. It can be by connecting hundreds of students together, multiple locations together. It can be by delivering the content onto the students' hands using personalized devices such as tablets. Okay. Mr. Praveen, we are seeing in this concept, you have 20,000 plus students. In a class, you claim you almost have 1,200 students at a time. So how are you able to actually address their queries? When I'm looking at a class or a training program, the difference here obviously is going to be that I'm completely dependent on that one person who's going to teach. It's up to that single trainer at one point of time. So there can be a group of trainers also, but one single trainer at that point of time to completely make it non-interactive. Predict queries, teach them different concepts in so many different ways. So we have this very simple approach of looking at a particular concept in 4 or 5 different ways. And it makes learning also that much more interesting. And what about the business mantra? We are seeing whatever you are earning, you are in fact spending that much or in fact spending more than that too. And Mr. Baiju, myself, all of us come from an engineering background. So not taught anything regarding financing. But the one thing that we did not do was save money. So we never decided that, okay, we made profit this year, so let's keep it in the bank or put it in an FD and then, watch it grow, or invest in a real estate plot and then probably build a house 10 years down the line. That's not something that we've ever planned to do. We've completely put what we had. If possible, something that we predicted will come in is what we have always planned to invest. And we have taken it forward that way. And that's been our growth story. Wishing you all the best, and your mantra is in fact catch them young too. At the age of 13, we are saying you're catching them and molding them and taking them forward. Any feedback on this? As SMEs, we don't have a choice. If your target audience, if your buyers, if they are moving to, if they are adopting technology, if they are moving online, we don't have a choice. Today things have become very easier for us because normal people, students, young parents, 35 plus businessmen, everybody has adopted technologies. We all have our smartphones in our hands, we all have our tablets, desktops. Everybody is using technology all the time. One more thing that I would like to add, in the last he said very important point, that he is keeping the promoter and company two separate entities. Yeah. That is very much important. Okay, we should not think that the company is doing good, so take out the funds from there and buy 2 Mercedes car or buy 6-floor bungalow. Better put the cash in the company, because you don't know, today it's good, tomorrow if there is some recession you don't have money. So always keep your company cash rich, always plan for 4-5 quarters ahead and then move forward. That is the most important thing. Right. That as in growth company, I will rather not like to call them SME companies, but growth companies. There's another question coming in via the tweet. This is from DS Shantakumar. I'm into garment business. I want to start my export now. Kindly help me out. This is going to be my first step. I'm planning to actually diversify now. I'm planning to reduce my dependence on selective clients. Pre-recession, most of India's exports have been to the large countries, for example, the US, the Europe, and less to the other countries. But post-recession, you find that there has been a lot of business which is now moving to or being done with, let's say, countries like LATAM, which was untouchable earlier. The thought of the gentleman is absolutely the right way to think. He wants to now exports. I'm assuming that he's in domestic business. He wants to do exports. He's into this year. Absolutely, and the export market is much better than what it was, let's say, 2 years back. Let's take final comments. We'll start with you, ma'am. There's a feeling that you say to SM units, go for ratings.
If you go for ratings, ratings are good, we'll give preference to you. But they say, once you go for ratings, why do banks have their internal process? Why is rating not sufficient in itself? This is a misconcept. If really the company has got the rating better, we will never go for our internal rating. And even if at all we go for internal rating, that is in support of what is being given. There's another very important aspect. SME units have given feedback that in these tough times they need your support. But instead of supporting them, you're putting a lot of pressure on them. During this tough time, we know that majority of them are not willful defaulters. It's only the circumstances made them to be like that. Definitely, as far as at least Corporation Bank is concerned, we are not going to publish any of the photographs of the guarantors or the borrowers. And I think the other banks who had initiated this sort of, the publicity and all also been advised suitably by the competent authorities. Okay, let's take final comments from you. Mr. Keshan, on financing we have touched, and Madam has just recently said, so what kind of support these bankers can actually give in these tough times? The priority sector lending norms are today tracked on a yearly basis, right? Why can't it be done on a quarterly basis? So that I think will, in some way pressurize banks also to provide uniform credit to SMEs. Mr. Thakur, final comments from your side. I think now the companies or growth companies also should start looking for alternative sources of fund. They should not put all the eggs in one basket, but also try to approach the PE funds, VC funds, stock exchanges. Mr. Ashwin, some learnings from international experiences, should something be adopted, or our ecosystem is altogether different? When I look at the last 5 years, I think entrepreneurial activity has only grown and become more mature. Right, so I see so much more activity today than last few years, despite the tough times. Okay. From a global perspective, I think the ecosystems are very different, right? We have to, as an ecosystem, mature to be able to support our entrepreneurs, like some of the Western ecosystems are. Final word, Sumit. I think as the SMEs, we need to keep our books better. We need to learn more about our business, the viability, the opportunities that are there, and obviously the lending institutions, they also need to look beyond just financing, look beyond scrutiny. They should look at them as partners. They should look at how can they help them grow in the whole piece. So that's all the time we had. Thank you all of you for sharing your views and joining us. But we'll request you to stay on. Next is Q&A session with the delegates. In SMEs, we always face the problem of working capital. And the more and more we go for the loans, the more and more we are trouble in the part of interest. You can have the peak time and non-peak time working capital. So during the peak time where you feel that there is a delay in getting your receivables, you need to have the money to meet the working capital. I think it can be fixed. Bankers are flexible, I think. Bank is more going by a thumb rule, 20%, and they're really not getting into details and trying to understand the business and assess exactly what is required. 20% of the projected turnover is, simply for the starters. Other one time, the newcomers are the small entrepreneurs. That is not, so in big, at least medium and the small entrepreneurs. Like there we go for, the 70% of the actual requirement like. Usually the elderly people of the family, they are having assets. If you go to the bank, usually their age is crossed. So they say after 60 you are not going to get loan. You said that, when a senior person who has got the asset but he doesn't have the age to avail the loan, there is always a clause that you can always, include a co-borrower. Now my question is on the lending rates, which is actually becoming a burden to the small industries. We are here, India Innovation Fund is there, India Mart is there, we are there. No, there should be a mixed match whereby you should also look for bank funding, you should also look for funds from the stock exchange, you should also look for seed funds, you should also look for venture fund. If all these mix and match you have, then you will find that, the interest rate burden is not that high. We need to look at other avenues, and there are programs which are sector specific, and maybe some amount of exploration on that front will help. Why can't there be a no collateral loan, at least on project based? Up to 1 crore raise, there's no collateral that you are aware of. And over and above 1 crore also many times, if you can offer a guarantee of somebody whose net worth is quite good, there also you can go up to 5 crores. Thank you very much. A big round of applause for all the panelists. Thank you, all of you. Vote of thanks, Mr. Sumit. Thanks, Saurabh.
a very, very big heartfelt thank you to all the community that has turned up here, esteemed panelists here who, gave us their precious time. India Mart and Zee Business, we partnered, 4 years back to take this initiative after we understood, dealing with the SMEs for over 15 years. And, we realized that there was no forum as such. There was no, voice, that was given to this community. And, we thought that if we could bring in, such esteemed panelists here, I think that's something which we have been able to do for the last 4 years. I really appreciate all of you giving us time. Thank you. Thanks a lot. That's it from Bengaluru round of Emerging Business Forum. We will be joining you with a new topic and a new panel soon in Mumbai. You can meanwhile follow us on Twitter and Facebook. But as of now, thank you for joining us. Namaskar. Goodbye. बैलेंस शीट जब आप देखते हैं यहाँ जो डोमेस्टिक फ्रंट पर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो आप उसमें क्या अंतर पाते हैं? बैलेंस शीट जो है एमएसएमई सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे एमएसएमई में सबसे बड़ी कमी यह है वो अपने प्रॉफिट्स को इतना ज्यादा उसको छुपाते हैं कि बैंकर को इतनी दिक्कत होती है कि फाइनेंस करना ही मुश्किल हो जाता है। और सिमिलरली रेटिंग एजेंसी को भी दिक्कत होती है क्योंकि आपका बैलेंस शीट ठीक नहीं है, हालांकि आपका टर्नओवर बहुत अच्छा है। एमएसएमई में 95% जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो आइदर सोल प्रॉपर्टी कंसर्न है या पार्टनरशिप है, तो उनके लिए तो कोई आरओसी में जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने जिस तरह से बनाना चाहते हैं बैलेंस शीट वैसे बनाते हैं। ने बोला पंखे का फैक्ट्री बंद कर दो, उसमें कोई प्रॉफिट न थे, और मैंने बोला नो, मुझे ये करने का है, मुझे पंखा बनाने का है। एक गधेड़ा आ थेपला के ढोकला नहीं कि हाथ फेरे और बन गए। पंखा है पंखा। हेलो पप्पा, 14 लाख सप्लायर અને 1 लाख प्रोडक्ट आजो। यूपी से ब्लेड અને मोटर, हरियाणा से कवर અને આપણા ગુજરાત માંથી પ્લાસ્ટિક અને બેઝ। पंखा की फैक्ट्री चाली पड़ी। मजा पड़ी गई। Business comes together at India Mart. हर कोई चाहे निराली स्टेनलेस स्टील किचन सिंक, सबका फेवरेट। बोल स्टैंड बोल, बालकनी बोल, सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, खान कपूर बच्चन बोल, ड्रामा कॉमेडी एक्शन बोल, गॉसिप लिंक स्कैंडल बोल, आरआर पैरेलल कमर्शियल बोल, धंधा बोल, कलेक्शन बोल, बॉलीवुड में जो मांगता वही बोल। ये अपन का बॉक्स ऑफिस सैटरडे संडे जी बिजनेस पर क्या बोलता है। चंद लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी स्पेस और अपना सवाल लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ट्रायल जेल लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। ओपनिंग बेल के बाद 30 मिनट एक्शन। क्या है शेयर बाजार का हाल, कैसी है कमोडिटी मार्केट की चाल, देश दुनिया की खबरों का असर और उनसे बनते बिगड़ते संकेतों पर नजर। मार्केट्स एट 10 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे। प्रायोजक हैं लिव इन ब्लाइंड्स, आपके दिल की ख्वाहिश, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च, लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो, और BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। प्रॉपर्टी, सोना या म्यूचुअल फंड, कहाँ मिलेगा बेहतर रिटर्न? टैक्सेशन से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के हर कंफ्यूजन का सलूशन। मनी गुरु सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे। ये पवित्र है, इसलिए धो लो, नहा लो। ये माँ है, इसलिए कूड़ा कचरा और लाशें सब मिला लो, बहा लो।
आखिर कब तक सहेगी मां गंगा? बस अब और नहीं। जी मीडिया की गंगा को बचाने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम गंगा जल माई प्राइड। इस मुहिम से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें 0954 028 5000 पर। जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस। बिग स्टोरी बिग डिबेट विद अमीश देवगन at 8 PM। प्रायोजक हैं BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। चंद लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी स्पेस और अपना सवाल लिखकर 57575 पर SMS करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। प्रायोजक लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। प्रॉपर्टी, सोना या म्यूचुअल फंड, कहाँ मिलेगा बेहतर रिटर्न? टैक्सेशन से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के हर कंफ्यूजन का सलूशन। मनी गुरु, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे। पहले विदेश मिशन पर भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई द्विपक्षीय समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर, सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का भी करेंगे उद्घाटन। जानलेवा हमले में बाल बाल बची फतेहपुर से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, सदर कोतवाली इलाके में मुंडन समारोह में 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग, 1 गिरफ्तार। यूपी के बरेली में मिली उत्तराखंड के लापता बीजेपी नेता राकेश रस्तोगी की लाश, संदिग्ध हालत में अपने ही कार में पाए गए मृत, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, नाम तय करना स्पीकर का विशेष अधिकार। IPL मैच में सीट को लेकर प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया में शुरू हुआ था विवाद, वानखेड़े स्टेडियम में VVIP गैलरी की CCTV को खंगालने में जुटी पुलिस, आरोपों की NCW भी करेगा जांच। फ्लैट खाली नहीं करने पर अड़े कैंपा कोला सोसाइटी के लोग, BMC ने 17 जून से बुलडोजर चलाने की दी है चेतावनी, लोगों को जल्द से जल्द मकान खाली करने के आदेश। मुंबई में आज हाई टाइड का अलर्ट, दोपहर 2:03 पर समंदर में उठ सकती हैं करीब 5 मीटर ऊंची लहरें। मोदी सरकार आज ले सकती है पहला बड़ा फैसला, धान समेत अनाज की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का हो सकता है ऐलान।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में इटली ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। कोलंबिया ने ग्रीस को 3-0 से दी शिकस्त, तो कोस्टा रिका और आइवरी कोस्ट ने भी जीते अपने अपने मैच। जी बिजनेस ने फिर लहराया परचम। मंडी लाइव को सर्वश्रेष्ठ कमोडिटी प्रोग्राम का अवार्ड। देश की बड़ी संस्था CPAI ने दिया सम्मान। दर्शकों के भरोसे को सलाम।